Assalamualaikum viewers, this is me Naila Tareem and I welcome you all to Javed Publishers. Today we are going to do an exercise from Kids English Science and the name of the chapter is Space and Satellites. So let's get started. Take out page number 85 of your textbook. Let's do the exercise. Choose and write the correct answer. NASA stands for, and your options are National Aeronautics and Space Administration, National Astrology and Space Administration, National Aeronautics and Space Allocation, National Atlantic and Space Administration. So the correct option is number 1. Number 2, the natural satellites are called stars, meteoroids, moons or planets. So the correct option is moon. Number 3, USA launched its first satellite in 1955, 1957, 1958 and 1959. The correct option is 1958. The first artificial satellite was launched by China, USA, Japan or Russia. So the correct option is Russia. Last, dash satellites inform about cyclones, earthquakes and floods. Your options are research, communication, weather or all of them. So the correct option is weather. Number 2, answer the following questions. Differentiate between space and atmosphere. The answer of this question is on page number 81. Number 2, what is the role of NASA in space technology? The answer of this question is on page number 82. What is a satellite? The answer of this question is in key points. Number 4, why are artificial satellites used? Artificial satellites को हम क्यों use करते हैं? The answer of this question is on page number 83. Now last question, which need compels scientists to explore the space? The answer of this question is on page number 83, last paragraph. Now work it out. Is it possible to have life on earth if there was no sun? Give reason to support your answer. I will suggest इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें या अपने ब्रेन यूज़ करें कि क्या अगर सूरज ना होता तो ज़मीन पर जो लाइफ है क्या वो एग्जिस्ट करती? सूरज हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है. हीट और लाइट के बिना क्या हम इस अर्थ पर सर्वाइव कर सकते? थिंक एंड टेल. नाउ रिसर्च वर्क. There are some experiments which cannot be done on the Earth's surface but can be done in the space station. Use internet or library or seek help from the class teacher. जी हाँ, एक्सपेरिमेंट करके बताइए ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो हम अर्थ पर नहीं कर सकते जबकि स्पेस में परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज स्पेस हैज़ नो ग्रेविटी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. सो ये ज़रा सोच कर बताइए कि ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें ग्रेविटी इस्तेमाल नहीं हो तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. हम उन एक्सपेरिमेंट्स के नाम बताइए. इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली इंटरनेट से ले सकते हैं. नाउ प्रोजेक्ट वर्क. मेक अ सैटेलाइट मॉडल यूजिंग नो कॉस्ट मटेरियल एंड देन प्रेजेंट इट इन द क्लास. स्टूडेंट्स 3D सैटेलाइट मॉडल्स विल बी डिस्प्लेड ड्यूरिंग एन इन हाउस साइंस एग्जीबिशन. एक सैटेलाइट का मॉडल बनाइए उन चीज़ों से जो कि स्क्रैप हों, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बेकार घर में पड़ी हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक सैटेलाइट का मॉडल बनाइए जैसे कि आपके बुक में भी दिया गया है, विच इज़ वेरी इजी टू मेक. और क्लास में उसको रिप्रेजेंट कीजिए या आपके स्कूल में कोई कंपटीशन है, मॉडल कंपटीशन, तो उसमें वो बनाकर प्रेजेंट कीजिए. कीप वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.